Well, good evening, everyone. A very warm welcome to Mr. Rahil Sheikh. Rahil bhai, thank you so much for joining in, taking out your time from your busy schedule. So, for Thank you. everyone, just a brief introduction of Rahil ji. Rahil ji is Vice President with Indian Sugar Traders Association, and he is Director and co-founder with Mayor Commodities, who is purely into exports of sugar. Rai comes in with a vintage of more than 2.5 decades of experience in the sugar industry. He has been handling the Southeast Asia business with a lot of companies for sugar business, and I believe no better person in India to understand the dynamics of sugar sector and the ethanol play apart from Rahil Bhai. So thank you, Rahil ji. Thank you so much for joining in once again. So, sir, over to you to start with. Uh, I would like you to just start with the scenario of Indian sugar industry. Where are we heading? What are the upticks and what are the pain points for the sugar industry? Followed by the global scenario. And then over the course of the discussion, sir, we will keep asking you some questions. Over to you, sir. Thank you. Thank you. Thanks, Vishal. Thank you so much. I think thank you very much for the introduction, and just wanted to, go back a few years ago when Indian sugar industry is generally always in the clutches. I mean, we have always seen it either in a very controlled form or in a very decontrolled form. So sugar industry have been in my career of 2.5 decades, as Vishal mentioned. I have seen this control being lifted twice and bringing back completely to a control level as well and decontrol as well. Except for one part which remains the most significant part, which is the cane pricing or sugar cane pricing, that remains under control forever. So we have seen the government of India announcing the basic principle of sugarcane pricing, and that pricing needs to then derive out the profit and loss for the sugar millers or the farmers. So just to sort of start off and give you a little background, that India have generally been, the sugar industry have been into the control scene, except for now 2018 onwards. We still remain very controlled. There is nothing which a mill can sell over and above the quota which the government gives. The export, for some reason, has got freedom this year, but until last 6 months ago, it was under the quota again. Then, when you come to the cane pricing, we are under the control regime. Ethanol pricing is again under the control of government of India, and nobody have other dynamics to it. The only thing which has changed this is the blending of the program which the government undertook, and the industry started to look more fashionable and more trendy and more modern rather than being as a political or cyclical commodity. As I mentioned to you, it still is under the control of one parameter, which is the government, and that continues. Just to run through the supply and demand side for the current season, which starts in the month of October and ends in the month of September. So October 21, we had an opening stock of about 8.5 million tons. We are going to produce about 38 million tons. We are going to divert about 3 million tons into ethanol. We can only do that because the capacity currently stops us at 3 million ton of diversion. And so the net production of sugar will be about 35 million ton. Consumption we are estimating at about 27.5 million ton. Export this season will be about 9 million ton. So we shall be having a comfortable closing stock at about 7 million tons. So this is the broader number on the supply and demand. We all got wrong this season for our sugar production number. We were all estimating it to be around 31 million, and it rose to about 35 million tons. The main reason was the good monsoon. So I think during this COVID period, I think nature repaired itself very quickly. We human tend to do it a little late, and we saw a very good rainfall during June, July, August, September. And then cane needs more water at times, and then we saw rains in the month of November, December. I think even Bombay saw a few drops of rain in the month of Jan. So the cane variety which was planted turned out to be very good during the month of so the harvesting during the Feb March
completely changed the game for the production, and India increased the production number by 4 million tons. And as luck had to favor us, we exported more 4 million tons of sugar, which we actually produced because the world market was good. And the world market was good because the Brazilian were under a drought condition. So the first time we saw God wasn't a Brazilian and he was Indian. So we finally had good rainfalls here, and Brazil faced a drought in about 90 years' time. So Brazilian sugarcane production came down from 600 million to about 520 million, and that gap allowed India to throw out its excesses into the world market. So the final export number as of now is about 7.2, and we estimate that this year we are going to do about 9 million tons of export. Going to the next year, I think just to give you a little more flavor of the agronomics, in India we do keep planting the cane after 2 or 3 harvests, wherein in Brazil we do it for 7 times. So for after 7 years. So in India it's a short cycle. That's why you see the cane strength and the growing pattern changing. So next year we feel that because of the cane remaining in the field today, we expect that the next year production also to be mirroring a mirroring a similar kind of a view, which is production at about 39 million ton as sugar and the sucrose, and then we will be diverting about 4 million tons of sugar into ethanol. Now again, that number is justifiable with the capacity. So even if you have more sugar, you can't divert it because it needs to be done through what capacities you have. So we estimate that it will be about 4 million tons for the next season. So sugar production again 35 million ton. Consumption may hit to 28 and a half. So we'll again have an exportable surplus of 7 million tons, and we shall again comfortable at 7 million tons of stock. So The domestic market, Rahul yeah. bhai, sorry to interrupt you. Now, if you can give a brief insight on the carry forward stock, given that what we understand is the carry forward stock has come down drastically from I think 90 lakh tons to around 68, 70 lakh tons. What I feel, and there is a lot of talk around, buzz around in the markets going on that over next 4 to 5 years, given the demand supply mismatch coming in, we may be going down like anything on the buffer stock, and India will probably be a net sugar deficit over next 5 years. How true these rumors are, and I mean, of course, everything depends upon the crop patterns, crop cycle, weather patterns. But how true this can be, if you can give a brief highlight on that as well. Uh, Vishal, if you look, we came from 12 million tons of opening stock, and we started to draw down the stock by exporting more sugar. Today we are when we come to 30th of October, 30th of September this year, 22, we shall be having 7 million tons of closing stock in the country. Now you need stock for 2 months because you come back into harvest in the month of November. So October and November is what you need stock for. So October consumption is about 2.5 million ton, and November consumption is about 2.5 million ton. So we need actually technically need 5 million tons before we start to go back into crush and start production. So generally this 2.5 month consumption which we keep for our country as buffer, we are carrying that forward. We are never going to go down to zero. And at a point of time, the litmus test to find out if you're running down on stock is your domestic market. Just to give you an idea, domestic market in the month of October was 36,000 rupees per ton in Maharashtra. Today it is 31,500 rupees per ton. So technically it has come down by 4.5 rupees per kilo, whereas the domestic export market went up from 29 rupees to 32 rupees. So international market is currently at a premium to the domestic market, and yet the domestic market is not making any fuss about it. So I personally feel that if we are drawing down the stock, and we are going to go deficit the stock, those stock you can consider that as a myth today, because the only answer it will come from the domestic market, and currently it is quite supplied by the millers.
फेयर था, फेयर था। तो राहिल भाई यहाँ पे एक चीज सब समझना चाहेंगे, हाउ व्हाट इज द कोरिलेशन, बिकॉज sugar has been in use, hitting international sugar, hitting new 52 weeks high, multi-year highs off and on. How does the correlation work on the international and the domestic pricing? If you can put a highlight on that, that would be great. See, domestic market is more or less a quota-driven market by the government of India. So we have no correlation with the world market as one to one, because world market, if you say it, if you see, it either trades refined sugar or it trades raw sugar. Currently in India, we consume is what is called as the low quality whites. So generally, technically, there is very little correlation between the world market and the Indian market. But for export market, we are dollar to dollar driven on the world market. So whatever we sell on the world market is for the export is generally covered with the parity which runs between Brazil and India. So Indian mainly homes to the India are Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Dubai, and Saudi, and Horn of Africa. So this region is supplied by us, and technically we work with the differential of the Brazilian parity which comes in. Other than that, if you specifically talk about domestic market to have one-to-one correlation, it currently is not happening because we are not an importer into the country, and export market is driven by it, but export is just about 7 million ton to a production of 38 million ton. So it doesn't have a one-to-one correlation. So, sir, when we talk about the export market, if you can throw some names on who are the largest beneficiaries, or who are the large, which are the largest players who would be benefited with the increase in export number. And yeah, Preeti also has a question. Preeti, go ahead. Hi, Rahilji, good evening. Good evening. Since we were talking on, the connect of Brazil prices of, how does it impacts basically. So one doubt that I have, if you could clear that I believe that the price of ethanol in Brazil is proportional to the price of domestic gasoline, and when the vehicles that run on gasoline or any kind of ethanol and any proportion. So does that affects any kind of consumer demands which is driven or it gives any kind of energy efficiency of ethanol, any demand for or any connect in these two things in respect to the competitiveness that they have in market. Uh, you see, Brazil is a very different breed. It blends about 24 to 27%, if I'm not mistaken, and it's more or less the ethanol parity is driven by the crude prices, which works in Brazil. So, for example, current ethanol parity, which is spot parity in Brazil, is about 23 cents or 22, 23 cents, whereas the sugar market is trading at around 20 and a half cent. So basically, ethanol is today getting 3 cents or 2.5 cent more parity than sugar. That's mainly political, I would say, because the crude is again linked through the government decides the gasoline price, and then the ethanol parity works on. It's not that the ethanol parity derives the crude prices there. And as we approach the election year into Brazil this year, I think it will be more political driven than S&D driven. But just for your information, I think we consider that this year also, if the ethanol parity remains around 1 cent to 2 cent premium to sugar, then we should technically see Brazil diverting about 57% of their cane into ethanol, and only 43% into sugar. And just for your information, this 1 percentage swing takes out 800,000 tons of sugar. So more or less, Brazilian ethanol parity derives the world market of sugar, and the crude prices derives the ethanol prices. So I think the linkage needs to run from crude to ethanol and then ethanol to sugar, and that's how the switch at the Brazilian production comes in. All right. So, like when there was COVID, I think at that particular point in time,
there it has adversely affected basically the domestic gasoline prices, the oil prices, and proportionally the ethanol prices as well. So, was it because of the demand significantly at that particular point in time, Yeah, or that time when the COVID happened, Brazil was also one of the countries which suffered from the COVID. So at that particular time, the ethanol prices had come down quite sharply because there was no demand, and sugar was front running it as well. So sugar prices were paying better than the ethanol at that time. All right. Thank you so much. So this clarity was much needed because what happens is, when we understand it as a normal person who wants to get into the reports of it, that doesn't makes any sense. So once you've explained it, it was pretty comfortable and You, understanding. you, Thank you, Ravi. you see what happens is if you go to the world market and see the structure, sugar market is visible and discoverable for say 12 months. The ethanol is not visible for 12 months. So it's easier for a sugar miller to take a call what it needs to produce for 12 months rather than a very spot or a 1 monthly basis. But looking at the crude prices today, we feel that Brazil will maximize on the ethanol side. Fair enough, Rahil bhai. So coming to my question, yeah, Preeti, you had something to say? No, no, no. So that's what I was correlating basically. So if the crude prices are high, gasoline will be also high, and the ethanol prices can probably be be up significantly. So this is Correct. I was correlating. Correct. But remember, it is also Brazil is India, so it's also politically sensitive, and it's going into the election year. So if crude goes to $200 and the president of Brazil decide not to increase the crude price, gasoline price, then your ethanol parity is hampered. So this year, So as I mentioned, technically is a year of Brazilian election. So kindly keep that in mind when you run that. all right, okay. So I think probably then there will be increase in demand, and the possible return for millers would be on a higher side. Uh, I mean, if the crude goes higher and the ethanol parity and the Brazilian also increases the gasoline price accordingly, then there will be a higher values. But if they don't increase, then probably this 2022 range remains the market for the moment. All right, Fair. thank you so much, Vishalji. Over to you. Thanks, Preeti. So, Rahil bhai, coming back to my question on which would be the major beneficiaries in the domestic sector, given that there are a lot of companies and the listed space and a lot of investor interest as well for the sugar sector per se. So, if you can also broadly throw a light on which companies are the largest beneficiaries on the export side, and then post that we will also, like to hear from you on the ethanol piece, on the domestic ethanol piece. Sir, I think domestic ethanol space is very well known now to everyone. I think every sugar mill in the North India currently is expanding big time into ethanol. I think we are hearing a big group now converting a complete plant into production from sugar cane straight into ethanol. So I think that space in the North India is very well captured, and I think all the listed mills in the North India are trying to take the benefit out of it. I think ethanol demand, just to run through the demand, we will be about 9 billion liters required to blend about say 20% by 2025, and if we expand to say that okay we will need about more 8% or 9% consumption increase in the fuel, then probably we'll need about 11 billion liters. Currently, our capacity to supply is about 3.5 to 4 billion liters, and I think sugarcane side there will be we will hit about say 5 to 5.2 billion liters in the next 3 4 years, and balance will come from the grain side. So now leave the grain side aside because I'm not the expert on who's putting onto the grain side, but I think on the ethanol side it's very clear that the North Indian millers are going to take the advantage. They have the cane availability there. Their sugar prices remain 2 to 3 rupees a kilo higher than the return from Maharashtra. So they are well sorted on that side. Mills like Balrampur,
Dhampur, Triveni. I think name the mills which are there on the listed exchange or even non-listed. I think ethanol is the flavor for them, and they are going to expand. There is another requirement of 2 billion liters of capacities to come in order to go to achieve that dream of 2025. And I think we see more and more zeal coming in from the North Indian mills rather than the mill in the South India, which is suffering currently from the cane side. राहिल भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. देयर इज सम रिक्वेस्ट फ्रॉम फ्यू लिसनर्स. इफ यू कैन ऑल्सो हिंदी में भी थोड़ा बता देंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा सर. हाँ, हिंदी में बिल्कुल. सो मैं बता रहा था कि एथेनॉल का जो डिमांड है हमारी साइड पे, वो अराउंड 9 बिलियन लीटर्स का है. सो उसमें से 5 बिलियन लीटर जो है वो शुगर सेगमेंट से आएगा, विच इज़ मोलासिस से आएगा. और 4 बिलियन लीटर्स जो है वो ग्रेन से आएगा. ग्रेन में कॉर्न हो गया और जितने भी दूसरे ब्रोकन राइस हो गया वगैरह से आएगा. सो 5 बिलियन लीटर्स के लिए अभी हमारी कैपेसिटी मेरे हिसाब से 3 to 3.2 बिलियन लीटर्स की बन चुकी है. सो शुगर में अभी भी 2 बिलियन लीटर्स का बनाने का स्पेस है, जिसके लिए एप्लीकेशंस है. एंड जहाँ तक मेरा अनुमान है, जितनी भी नॉर्थ की यूपी मिलर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, भागीदारी करने के लिए. जहाँ तक साउथ का सवाल है, वो थोड़े मुझे लगता है कम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वहाँ गन्ने को 2-3 साल काफ़ी उन्होंने ड्रॉट वगैरह को देखा है. तो उनके लिए ये डिफ़िकल्ट रहेगा ये एक्सपांशन में साथ देना. महाराष्ट्र और कर्नाटका की मिलें भी जो है वो काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट कर रही है. बट आई थिंक जो अभी नेक्स्ट फेज़ ऑफ एक्सपांशन आएगा वो मुझे लगता है वो यूपी मिलर्स से आएगा और कर्नाटका मिलर्स से आएगा, बिकॉज ये दो जगह पे एक्सपांशन की काफ़ी उम्मीद लग रही है. तो राहिल भाई, यहाँ पे एक सवाल ये उठ के आता है कि लाइक आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई एक बड़ी मिल जो है टोटली शुगर से डायरेक्ट ही वो इथेनॉल के ऊपर जा रही है. तो सर, व्हाट इज द परसेंटेज अगर हम बात करें कि जो सीरियस है या मोलासिस से बनता है इथेनॉल, एंड व्हाट ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी जा रही है, अगर आप उसके ऊपर एक थोड़ा ब्रेकअप दे सकते हैं. और व्हाट काइंड ऑफ रेवेन्यूज इंक्रीज और अपटिक कैन बी सीन in the balance sheet of sugar mills in terms of percentage. If you can also throw highlight on that, that would be really appreciable. आई पर्सनली फील कि आज की तारीख में जो है सरकार ने 3 तरीके से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी हुई है. पहला है जो सी हैवी मोलासिस कहा जाता है, जिसमें कि शुगर कंटेंट कम होता है और उससे ज़्यादा आप शक्कर बनाते हो बेसिकली. दूसरा है बी हैवी मोलासिस, जिसमें आप मोलासिस शुगर में छोड़ देते हो, शुगर कम बनती है और उस मोलासिस से फिर आप ज़्यादा रिकवरी वाले एथेनॉल बनाते हो. और तीसरा है केन जूस, और केन जूस से आप डायरेक्टली बनाते हो. और तीनों के सरकार ने साइंटिफिक तरीके से या नॉन साइंटिफिक तरीके से कुछ प्राइसिंग रखी हुई है बेसिकली. तो एक का दाम 47 रुपया है सी से, बी से बनाने पे 57 या 58 या 60 रुपये हैं. मेरे सामने नंबर्स नहीं है. और केन जूस से 71 या 72 रुपये हैं. सो अगर आप इन तीनों में देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो है 80% जो फ़ायदेमंद है वो बी हैवी से बनाना है. तो सारी मिलें जो है वो बी हैवी से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, ना कि गन्ने के जूस से कर रही है करंटली. सो करंटली जो मोस्ट फेवरेबल मॉडल है वो ये है कि आप बी हैवी से बनाइए. और बी हैवी में आपको कम से कम नहीं तो भी मेरे हिसाब से शुगर का प्राइस अगर आज डोमेस्टिक मार्केट में 3132 रुपया है, तो अगर आप बी हैवी से बनाते हो तो आपको 36 रुपये का शुगर रियलाइजेशन आता है. सो आई थिंक इट इज़ मच ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन कि आपको समझ में ये आएगा कि बी हैवी से अगर आप बनाते हो तो आपको 4 से 5 रुपये का फ़ायदा है देन द डोमेस्टिक मार्केट करंटली विच इज़ देयर. दैट्स वाई अगर आप इस्मा से या आहिस्ता से या नेशनल फेडरेशन की बातें सुनोगे तो वो कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ शुगर को भी आप 34-35 रुपीज़ कीजिए, बिकॉज दिस इज़ द बेंचमार्किंग कि अगर एथेनॉल को बनाने में 34 रुपये शुगर के मिलते हैं तो शुगर को फिर 3100 रुपये में क्यों बेचना. राइट सर, राइट. तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो शुगर मिल्स हैं ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे उनकी बैलेंस शीट के अंदर जो डेट रिडक्शन और उनकी रेवेन्यूज बढ़ने लगेगी. करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ने लगेगी, बिकॉज जितना शुगर वो डाइवर्ट कर देंगे उतनी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा है. तो शुगर अगर हम बना के 3100 रुपये में बेच रहे हैं, आज हम शुगर कितनी बना रहे हैं, हम शुगर बना रहे हैं 35 मिलियन टन.
ठीक है, और एथेनॉल बना रहे, समझो उसमें डाइवर्ट किया हमने 3 मिलियन टन। तो बेसिकली हमने अभी तो सिर्फ 8% की डाइवर्जन पे आए हैं। अगर ये डाइवर्जन 20-30% तक हम ले जाए, 6-7 मिलियन तक ले जाए इसको, तो फिर यू सी द प्रॉफिटेबिलिटी इज देयर, नो, बिकॉज जहाँ शक्कर का दाम 3100-3200 रुपया है, वहाँ एथेनॉल रियलाइजेशन उनके लिए 3500-3600 रुपये है। तो राहिल भाई यहाँ पे फिर ये इम्पैक्ट नहीं आएगा कि शुगर जो डोमेस्टिक मार्केट में शुगर जो शक्कर बन के बिकती है या स्टोरेज होती है, वहाँ पे डिमांड सप्लाई गैप नहीं आने लगेगा, गिवन दैट की डिमांड तो बढ़ती रहेगी और सप्लाई कंस्ट्रेंट, बिकॉज नो, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज नो न्यू शुगर मिल्स आर कमिंग अप, और गन्ना तो उतना ही है। नहीं तो विशाल, डोंट यू यहीं पे थोड़ी सी हमारी गलती होती जाती है हर टाइम, आई थिंक। जब से मैंने करियर चालू किया, हम लोग ने हमेशा फूड स्कैरसिटी और फूड को हम कभी भी हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, ये डिबेट हमेशा से चलता रहा है। बट आप देखिए, फार्मर्स ने और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑफ फार्मिंग बोल लीजिए, या उसकी सीड, या एग्री इनपुट बोल लीजिए, जहां हम 50 टन पर हेक्टर निकालते थे, आज 120 टन, 100 टन निकालने लग गए। वही ज़मीन उतनी ही रह गई है। आज 5 बिलियन टन, जहाँ आप अगर देखोगे तो 10 साल पहले गन्ना 254-255 मिलियन टन होता था हिंदुस्तान में, आज 430 मिलियन टन के करीब चला गया है। तो आई थिंक वी हैव डबल द केन कैपेसिटी विद द सिमिलर अमाउंट ऑफ लैंड। और जहाँ तक हमारी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, वो 40-42 मिलियन टन्स पर है। तो आज मुझे तो यही दिख कर आ रहा है कि हमने अभी ब्राज़ील को शुगर प्रोडक्शन में बीट किया है। मुझे ऐसा लगता है भाई 2025-26 को हम शुगर केन में भी बीट कर जाएंगे, तो हम 600 मिलियन के ऊपर केन पे चले जाएंगे। खाली इसमें एक ही रिस्क रहता है कि वेदर एनामली अगर हो गई, कि बारिश नहीं है, तो प्रॉब्लम है। बट महाराष्ट्र में आज इरिगेशन पानी इतना है, डैम सारे भरे हुए हैं, तो मुझे तो 2-3 साल तक के लगता नहीं कि हिंदुस्तान को स्ट्रक्चरल एक्सपोर्टर से कोई चीज़ रोक सकती है। द ओनली थिंग विच कैन स्टॉप अस इज मानसून। एंड किसान के लिए गन्ना जो है, ये कोविड में भी सबसे आसान कमोडिटी हो गई, बिकॉज मिल्स उसको काटती है, मिल्स अंडरटेक करती है प्रोग्राम को, तो लेबर इंटेंसिव रहा नहीं। और स्टडी क्रॉप है, आई मीन वो ख़राब होता नहीं है। ड्रॉट भी आया तो कुछ तो निकल ही आता है। सो बेसिकली आई थिंक फार्मर्स विल रिस्पॉन्ड बैक टू शुगर। आई थिंक गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था कि शुगर का प्रोडक्शन कम हो और शुगर कम बने और एथेनॉल ज़्यादा बने, मुझे लगता है वो ऑब्जेक्टिव से हम बियॉन्ड जाएंगे कि हम शुगर केन इतना लगाएंगे कि शुगर भी बनाएंगे, शुगर एक्सपोर्ट भी करेंगे, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, और उसके बाद भी क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा। फैंटास्टिक सर, दिस इज न्यूज़ टू एवरीवन आई थिंक। तो हम भी क्योंकि एग्री में रहते हैं, तो दिस इज समथिंग न्यू आपसे सुनने को मिला है। तो नहीं, आप यहाँ पे दस सर साल एक 10 साल में शुगर केन का रिकॉर्ड देख लीजिए भाई, यू विल कम टू नो। अगर मतलब कोई हम्म, चीज़ में अगर प्रेजेंटेशन वाला होता है ना, आई कुड शो यू द स्लाइड। कंसिस्टेंट ग्रोथ किया है भाई, आई मीन देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट। fair enough। तो राहिल जी, जैसे आप कह रहे हो कि गन्ना ज्यादा लगेगा, शुगर की तरफ किसान, ये गन्ने की तरफ किसान जाएंगे, तो कौन से क्रॉप के ऊपर, क्योंकि गिवन दैट कि गन्ना जो है वो नौ, आई थिंक 15 महीने का क्रॉप होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट इज 15 months एंड देन उसके बाद में 9 महीने 10 महीने में कटता है। तो सर फिर कौन सी क्रॉप के ऊपर देयर वुड बी डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, कोई और क्रॉप की सोइंग कम होगी, एंड विच ज्योग्राफीज यू आर लुकिंग, जहाँ पे आपको लगता है कि यूपी, महाराष्ट्र बीइंग एंड लिटिल बिट ऑफ पंजाब, अगर ये तीन स्टेट्स को छोड़ दे तो कहीं और भी ज्यादा गन्ना होएगा, कि हाउ हाउ डज दैट मूव, इज देयर आई एनी थिंक चेंज ओवर देयर? आई थिंक इसकी डायनामिक्स जो है ना, अभी मेरे सामने पेपर्स इतने डेटा में है नहीं, बट आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ एग्जांपल। महाराष्ट्र में 1.1 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन लगी हुई है, और महाराष्ट्र जो है वो 100 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर गन्ना उगा लेता है। यूपी में 2.2 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन है, और वो महाराष्ट्र जितना ही गन्ना निकालता है या थोड़ा ज़्यादा निकालता है, एंड देन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डाइवर्जन इनटू शुगर के इनटू अल्टरनेटिव स्वीटनेस। तो अगर आप महाराष्ट्र और यूपी के बीच में यील्ड का डिफरेंस देखोगे, तो मेरे हिसाब से आज भी 30 टन पर हेक्टेयर का है। अगर वो 2.2 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पे आप 30 टन ऐड कर दो, तो हम काफ़ी काफ़ी हद तक के यूपी में ग्रोथ कर पाएंगे।
मुझे लगता है यूपी कैन इजीली क्रॉस व्हाट महाराष्ट्र इज करंटली प्रोड्यूसिंग. सो देर इज अ स्कोप टू प्रोड्यूस 3-4 मिलियन टन मोर शुगर इन यूपी इवन आफ्टर डाइवर्जन, अगर वो गन्ने का जो उनका चेंजेस ला रहे हैं. और जब एक चीज़ आप याद रखिए, जब शुगर मिल की बैलेंस शीट हेल्दी होती है तो एग्री इनपुट पे बड़ा काम होता है और किसान के साथ में संबंध ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं. तो आई मीन बिकॉज दे आर रिलाइंग ऑन शुगर केन टू बी प्रोड्यूस बाय द शुगर फार्मर्स. सो आई थिंक यू नीड टू एंश्योर दैट एग्रीनॉमिक वर्क्स कि अगर मिल के पास बहुत पैसा है तो वो आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसमें एग्री इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट लाएगा और केन पे और केन की वैरायटी को बदलने का काफ़ी काम करेगा. और जस्ट टू गिव यू वन आइडिया कि मुझे नहीं लगता कोई दूसरे क्रॉप पे शुगर केन भारी पड़ेगा करंटली, बिकॉज हम 4.8 बिलियन हेक्टेयर ज़मीन से लेके 5.4 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन के बीच में रोटेट करते हैं और हमारा प्रोडक्शन भी इसी रेंज में चलता है. तो बेसिकली मुझे नहीं लगता अगर 6 मिलियन ज़मीन पे चले जाए तब हमको लगेगा कि हमने सोया से, या सोया भी नहीं बट कौन सी और कमोडिटी से ले लिए. बट एट द मोमेंट आई थिंक शुगर केन रिमेन्स इन इट्स ओन रीजन. और जो उसके 5.4 मिलियन हेक्टेयर्स किसान हैं, आई थिंक वही आज अपनी बेटर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से गन्ने में और इजाफा ला सकते हैं. उसके अलावा मुझे अभी लगता नहीं है कि शुगर केन इज गोइंग टू स्नैच लैंड और एनी अदर क्रॉप आउट ऑफ इंडिया. Fine, fine. So, Rahil ji, given that most of our listeners are majorly investors and investor interest इनका सबका रहता है, they are most of them are invested in sugar stocks, the agri input stocks and multiple other stocks. तो आपने एक बहुत अच्छी चीज सर यहाँ पे बताई है कि you spoke about the agri input जो है inputs के अंदर किसानों का काफी ये है आएगा. So, do you mean to say that the demand of agri inputs will also go up? So, for everyone's perspective, when one sector starts performing, one agri crop starts performing very well, and sugar being one of the largest crop in the country, agri inputs companies के ऊपर भी इसका impact पड़ेगा, which will have a positive impact. So, I think companies like PI Industries or Insecticide India or Dhanuka Agritech will also be gain some investor interest. हाँ, आई Correct me मीन if I'm wrong. सॉरी विशाल, इज दिस क्वेश्चन टू मी? Yeah, I mean, general. It was general. हाँ, आई एम श्योर ना. ये आई कर थिंक एवरीथिंग विल हैव एन इफेक्ट ऑन समथिंग और द अदर. बट आई थिंक जो हिसाब से अभी फर्टिलाइजर्स के दाम है, आई थिंक वो एक सेगमेंट को देखना पड़ेगा. बट आई थिंक पर्सनली अगर शुगर मिल की बैलेंस शीट हेल्दी है तो किसान के पास भी ज़्यादा पैसा है, और किसान के पास पैसा है तो एग्री इनपुट्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए. आई मीन ये तो पूरा के पूरा एक इकोसिस्टम है जो कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा. तो राहिल भाई, एक यहाँ पे फॉर एवरीवन अंडरस्टैंडिंग, अगर आप एक बार शुगर का गन्ना गन्ने से लेके शुगर तक का अगर आप वैल्यू चेन समझा सके कि भाई वाई शुगर मिल्स इन पास्ट हैव बीन ब्लीडिंग, कि भाई गन्ना जो है समझो 250 रुपए का बिकता है और एमएसपी शुगर की 31 रुपए है, तो व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअली फॉर शुगर मिल्स? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. एंड हाउ डज दैट कैलकुलेशन कम इन? That is my first question. And second question is, do you see any decontrol happening by government on the sugar prices? क्योंकि नहीं तो क्या होता है, जैसे ही 40 रुपए का भाव आता है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंटरवेंशन ले आती है शुगर के अंदर. तो ये दो चीजों पे सर क्या कैलकुलेशंस होंगी, एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन दी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ द प्राइसेस ऑफ शुगर इफ द प्राइसेस गो अप? सर देखिए, एट द एंड तो माई बाप तो सरकार ही है. और इन्फ्लेशन कहाँ पे उनको हर्ट करता है वो ये आज की तारीख में वो ही जानते हैं. सो पर्सनली स्पीकिंग, शुगर इंडस्ट्री पहले क्यों लॉस करती थी, तो मैंने कहा जब स्टार्ट किया तो शुगर इंडस्ट्री 5 साल कंट्रोल में रहती थी, फिर 2 साल डी कंट्रोल में रहती थी, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहता था. कभी भी ऐसा मौका आया नहीं कि सरकार ने इसको फ्रीडम दिया है ये अपना गन्ने का प्राइसिंग करें, ये अपनी शक्कर की प्राइसिंग करें और और अपना अपना माल बना के अपने हिसाब से एक्सपोर्ट में बेचे या डोमेस्टिक में बेचे. सो दैट नेवर एग्जिस्टेड. तो शुगर मिल्स वेर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इसकी सबसे बड़ी जो हमारी समस्या थी वो शुगर केन प्राइसिंग की थी. तो शुगर केन के प्राइजेस हर साल
₹100 से बढ़ जाते थे, विच इज़ ₹1200 ₹1300 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ जाते थे, और उसके सामने हमको कभी भी शुगर की फेयर वैल्यू नहीं मिलती थी, बिकॉज एक्सेस प्रोडक्शन रहता था, और जब एक्सेस प्रोडक्शन नहीं रहता था तो हम इंपोर्ट करते थे, विच अगेन यूज टू हर्ट द मिल्स बेसिकली, रादर देन द ट्रेड एज सच. तो दैट वो सिलसिला बहुत सालों तक कंटिन्यू किया, अंटिल आई थिंक 2017, जब भारत सरकार ने पहली बार एक नोटिफिकेशन इशू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 3100 रुपया हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुगर का रखेंगे. ना जब उन्होंने 3100 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया, तो दैट एक्चुअली मेड 31,000 फॉर महाराष्ट्र, तो वो ऑटोमेटिकली यूपी के लिए 3300 से 3400 रुपये के करीब का रेंज हो गया, पर टन की मैं क्या बात कर रहा हूँ. तो इसमें ऐसे हुआ कि एटलीस्ट इनको स्टॉप लॉस मिल गया. तो अगर गन्ने का दाम अगर समझो सरकार हर साल 50 रुपये 100 रुपये बढ़ा रही थी, तो 3100 रुपये का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने लगा दिया फॉर सेलिंग शुगर इन द डोमेस्टिक मार्केट, दैट एक्चुअली अलाउड द शुगर मिल टू कम बैक टू लाइफ. फिर उसके बाद भारत सरकार ने तकरीबन कंटिन्यूसली 3 साल शुगर पे सब्सिडी दी, अगर आपको याद होगा, 7,700 रुपये, फिर 11,000 रुपये पर टन, फिर आई थिंक 6,800 रुपया पर टन. तो ये 3 साल सब्सिडी देते देते सरकार ने ये रियलाइज़ किया कि अब इस सब्सिडी का कोई मतलब नहीं है, ये सब्सिडी से बेटर है कि हम एथेनॉल प्रोग्राम में चले जाए, और ये सब्सिडी में हम देख $2 बिलियन जो दे रहे हैं, और डब्ल्यू से भी हमको फटकार मिल रही है, तो हम बेटर है कि हम इसमें एथेनॉल प्रोग्राम में चले जाएं. और जहां उन्होंने एथेनॉल प्रोग्राम अनाउंस किया और कैपेक्स अनाउंस किया, और प्राइम मिनिस्टर ड्रिवन हो गया, बिकॉज इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच, आई थिंक फेयर इनफ फॉर टू हैव एन एनर्जी सेक्टर की अगर बात है, और सेल्फ रिलायंस की बात है, तो आई थिंक इट विल बी टॉप ड्रिवन. और जब से वो अप्रोच आ गया इस बाजार के अंदर, the private mills really sort of came onto the plate, and pedaled it up to increase the ethanol capacity. And now I think sugar is looked as energy sector, and I think when you are looking at energy, I think is it's disassociating itself from the sugar. But long term I think as you mentioned, we are still not a 1G economy to produce ethanol. When I say 1G is food, because at the end of the day, if we'll have shortage of production, then I don't know what roles that the government takes in on this account. But but 1G is something which is in long run is not something which we are suited for, unless we keep growing sugarcane. जो मेरा अपना view है, so I'm not too bothered currently. But yes, I mean, weather anomalies can come in, and there could be because it's an agricultural crop, so failure is solely dependent on God. But I think that's the only risk factor. Other than that, I think the government support from the top down approach is just amazing on the ethanol side. So I think one should write this story, and it still have a lot of space to grow, because we are growing as well, so the blending program will grow as well. Fair enough, fair enough. I think Preeti has a question for you. Preeti, over to you. Uh, yeah, Preeti, you had a Yeah, question. yeah. I was asking a question that um, we were talking about, the entire story of, how the Rapex has been, how, things have grown. So when we talk about this entirely, that what are the other factors that could benefit the growth? I think we have already spoken about the climate. Uh, you know, um, uh, then again, one question is there in my mind that it's quite a perishable product. So, are these factors also affect like what kind of land availability is there in India? Are there abundant low cost labors, which are there in mills? So these are the also factors which affect a lot of, I think, the output cost as well. So if you can brief something on that one. You see, sugar cane production side पे अगर आप देखोगे तो I think farmers are planting the sugar cane, so they are using their own laborers and growing the sugar cane side.
महाराष्ट्र में जो है हार्वेस्टिंग जो होती है वो महाराष्ट्र की मिल्स अंडरटेक करती है, और यहाँ पे जो है वो रेट्स फिक्स्ड होते हैं कि कितने किलोमीटर्स पे कितना पैसा देना है एक एक टोली को. सो आई थिंक देयर इज अ जनरल इन्फ्लेशन विच कैरीज ऑन एवरी ईयर. तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो यू सी एवरी अक्टूबर देयर स्टोरी कम्स इन एंड देयर स्टोरी वैनिशेस इन द मंथ ऑफ मार्च. Other than that, chemical costs, yes, will are showing a sign of increase, but that's marginal. I think sugar mills energy को export करती है by themselves, so that's not too bad for them. और sugar के ऊपर perishable होना मुझे नहीं लगता that is right, because sugar can continue to be in its form for about 3 to 4 years in the No, warehouses. sorry, I was asking about sugarcane. Like it's a perishable product, right? शुगर केन तो हम पूरा क्रश ही कर लेते हैं ना. आज कैपेसिटी हमारे पास 40 से 42 मिलियन टन की है, और हम अभी बना रहे हैं 35 मिलियन टन. सो वी स्टिल हैव इनफ कैपेसिटीज टू कंटिन्यू टू ग्रो द शुगर केन. जब हम 38-39 के पास पहुंचेंगे, उसके बाद देन वी हैव अ कैपेसिटी क्रंच एंड प्रॉब्ली विल नीड टू पुट अप मोर कैपेसिटी. थोड़ा बहुत गन्ना लोकेशन वाइज, like Marathwada has excess cane and Kolhapur has deficit cane for the number of days it can operate. But वो बहुत छोटी anomaly है, वो 5 साल में एक बार आती है, not to a major extent. Right. All right. Okay. Okay. And what about there are certain states which are into production a lot. I think Karnataka, Maharashtra, and UP. So there was previously, I think, by government there was certain norm that you have to sell the products in a certain radius or something. So is it still there, or there the norms have been changed? शुगर केन जो है, शुगर केन को 15 किलोमीटर के रेडियस से में देते हैं. दैट इज द रजिस्टर्ड केयर एरिया फॉर अ शुगर मिल. But generally it travels about 30-40 kilometers, no problem. But sugar is free to sell. You can sell to any part of the world or any part of the country. Even ethanol as well. It's free to be delivered to any part of the country. Yeah. All right. Okay. Thank you. This is what I was asking, Vishal. You can take it ahead. Thank you. Thanks, Preeti. Sharad ji, you have a question? No, one now sugar is at 20 cents. Suppose Yes. if it goes down to 16 or 17, what जी would be the dynamics? सर 16 and 17 अभी तो फिलहाल लगता नहीं है, बट एनीवे इफ इट गोज नहीं देयर, इफ इट गोज नहीं, देयर. अभी एक महीने पहले 18 का भाव था. जी वो तो वदगट होता है. हाँ, नहीं, अगर अगर 16 पे जाता है तो क्या सिनेरियो रहेगा. हाँ अगर हाँ 16 पे चला जाता है तो आप ये समझ के चलिए कि ब्राजील जो है, जो हम अनुमान लगा रहे 34 मिलियन टन शुगर बनाएगा, वो 28 मिलियन टन बनाएगा. और जब वो 28 मिलियन टन बनाएगा तो ग्लोबल में जो आज फ्लैट है वो 6 मिलियन के डेफिसिट पे चला जाएगा. तो वो 16 सेंट को जाना इज लाइक ब्राजील को कहना है कि आप शक्कर बनाना बंद कर दो, आप एथेनॉल ही बनाओ. और वो जो पोर्शन है वो मुझे लगता है कि अभी क्रूड को प्राइस को देखते हुए आना थोड़ा मुश्किल है. बट मार्केट एज यू राइटली सेड कि कल अगर वो आ जाए, अगर वो 16 सेंट पे आता है तो एथेनॉल बनेगा ज़्यादा, और ब्राज़ील जो है वो उतनी शक्कर कम बनाएगा. नहीं, और सपोज कि 23-24 हो जाता है तो बीट रूट का मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा. अगर 24-25 चला गया तो आप ये समझ के चलिए सर कि हिंदुस्तान का डोमेस्टिक मार्केट 36 से 40 रुपए के रेंज पे आ जाएगा पहला, क्योंकि नहीं एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से 40 मिलियन 40 रुपए में होने लग नहीं जाएगा. नहीं, मैं बोल रहा था बीट रूट का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा यूरोप. बीट रूट का सर, हाँ. यूरोप में थोड़ा सेचुरेशन है. यूरोप में बहुत सालों से वो, मतलब उन्होंने इतनी बड़ी कोई ग्रोथ स्टोरी लाई नहीं है अभी तक के. नहीं, मैं बोला कि अगर 23-24 हो जाता है तो वो शुरू हो जाएंगे. सर अब वो देखो, प्लांटिंग तो रहेगी. अगर 23-24 में तो हिंदुस्तान में हर कोने में गन्ना लगने लग जाएगा. तो 23-24 इज अ गुड प्राइस. अगर वहां जाएगा तो यूरोप विल डेफिनेटली एक्सपांड इट एरिया, और वो 2-3 साल के लिए वो हेज करके चल सकते हैं इस प्राइसिंग को. बट आज सर एक चीज तो है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि फार्मर जो है वो बहुत क्विकली रिएक्ट कर लेता है हाई प्राइसेस के ऊपर. तो अगर 24 सेंट गया तो ब्राजील, इंडिया, यूरोप, थाईलैंड जितनी मर्जी है उतनी जगहों पे गन्ना लगा देंगे. वो घर के पीछे बैकयार्ड में भी लगा देंगे फिर. तो बीट रूट हो गया, गन्ना हो गया. तो आई थिंक 24 सेंट इज अ वेरी गुड प्राइस अकॉर्डिंग टू मी.
और अगर एक बार हिट करता है तो वी शुड सी प्रोडक्शन राइजिंग साइजेबली इन द ग्लोबल मार्केट नो एंड बट वंस। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस अभी 5-6 साल से मैं नहीं करता हूँ, 18 से 22 जी मैक्स, जी और नीचे में 14 से 16 बस। सर, आई थिंक देखो प्राइसिंग का तो बड़ा डिफिकल्ट होता है सर, एक एक मोमेंट पे शॉर्ट टर्म में हम बता पाते हैं, बट मेरा अनुमान ये है कि शुगर के ऊपर जो अभी डायनेमिक्स है ना, अभी मार्च के बाद में, सॉरी अप्रैल के बाद में, ये हम्म, बहुत वेदर रिलेटेड चलेंगे सर। फॉर हम्म, एग्जांपल इंडिया में अगर मानसून फेलियर दिखाई दिया, अभी स्काईमेट ने तो कहा ठीक है, तो इंडिया थाईलैंड के ऊपर मानसून का इफेक्ट क्या रहता है, और क्रूड प्राइसेस क्या रहते हैं फॉर ब्राजीलियन प्रोडक्शन। सो ब्राजील का प्रोडक्शन चालू होता है मई में, हमारा खत्म होता है मई में, और हम्म, यहाँ पे 3 महीने की वेदर एनामली चलती है। तो अगर हम्म, खुदा ना खास्ता कुछ भी गलत हुआ, तो हम्म, यू हैव द मार्केट ऑन द रॉन्ग साइड, which कैन बी sort of कैन गो अ बिट हायर, बिकॉज हम्म, गन्ने को फिर आना और बीट रूट को फिर आने 12 से 14 महीने लगते हैं। तो वो टाइम पे कौन इसको फिल करेगा? वर्ल्ड इज क्वाइट बैलेंस करंटली, बड़ा एक्सेस नहीं है। ये जनरली जब एक्सेस होता है तभी ये थियोरी अपनी काम कर जाती है कि हमने एक बैंड बना लिया। पर आई थिंक आज वर्ल्ड बहुत बैलेंस है, और कोविड में लोगों ने क्या किया है सर, अपने घरों में से स्टॉक खा लिया है। तो अभी जैसे हम्म, मैं अफगानिस्तान देखता हूँ, श्रीलंका देखता हूँ, जिबूती देखता हूँ, इथोपिया देखता हूँ, इन्होंने हम्म, स्टॉक को ड्रॉ डाउन कर दिया क्योंकि फ्रेट अवेलेबल था नहीं, फ्रेट हम्म, इतना महंगा था। तो कहा चलो जो अपने घर में चीनी है पहले वो खा लो, इंपोर्ट बाद में करेंगे। तो आज ऐसा है कि क्रिटिकल लेवल पे हर कंट्री है, तो कहाँ से स्पार्क मिल जाए, किसको इंपोर्ट करना पड़े। जैसे लास्ट मंथ में सुन रहा था दुबई में कि अल्जीरिया ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। अब हम्म। अल्जीरिया जैसी इतनी छोटी कंट्री है, वो शक्कर को लेके सेंसिटिव हो जाती है। तो दिस इज वेर अ गवर्नमेंट एंड शुगर गोज टुगेदर। तो जितनी पॉलिटिक्स शुगर में है उतनी गन्ने में भी है, तो आई थिंक वी हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट। आई पर्सनली फील कि आपका रेंज सही है 18 से 22, बट 14 से 16 सर आई वुड बी अ बायर। नहीं नहीं, यू वुड बी अ बायर बट मैंने, नहीं मैंने बहुत टाइम देखा है नीचे में 11 सेंट हुआ, हाँ करेक्ट 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 वो सब होते रहते हैं। करेक्ट सर। बट ऑन द अपसाइड 22, डाउन साइड 16, 17, 17, 18। हाँ 16, आई मीन यू कैन टेक दैट बैंड एज अ गुड बैंड। या थैंक यू सर। थैंक यू भाई। So, thank you, Sharaji. So, Rahil bhai, so can we say that we are not in the end of the fag end of the sugar cycle? We are right now in the middle of the 5 year sugar cycle. How do you look at the current prices and current S&D, and where do we stand in the sugar cycle? Do we see a lot of uptick from these levels as well, in terms of the balance sheets for the companies as well? और वी आर इन द फैग एंड, यहाँ पे सैचुरेशन आएगी और फिर लाल पीरियड आएगा ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स? क्या लगता है सर उसमें? नहीं, आई थिंक इट्स वेरी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट भाई, एज आई मेंशन टू यू। अगर आप देखोगे तो इट्स नॉट अ डी कंट्रोल कमोडिटी। तो आपको ये देखना पड़ेगा दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट करंटली। और मेरा व्यू ये है कि इट्स नाउ गेटिंग सस्टेनेबल। शुगर इंडस्ट्री जो है, अगर सरकार ने एथेनॉल प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा और डीरेल नहीं किया, तो आई थिंक वी आर इन अ जोन वेर वी आर इन अ वेरी सस्टेनेबल जोन, एंड शुगर इंडस्ट्री स्ट्रक्चरली एनर्जी सेक्टर बन सकती है। ये मेरा अपना अनुमान है, बट इट नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट, बिकॉज अगर आप देखोगे तो एथेनॉल का एक ही बायर है आज, और वो है भारत सरकार। सो यू नीड दैट सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप ऑन। राइट राइट। सो सर, थोड़ा सा एक ऑन अ लाइटर नोट सर, शुगर, कौन सा शुगर स्टॉक लेना चाहिए? विच शुगर कंपनीज डू यू सी आर विल परफॉर्म आउट परफॉर्म द पीयर्स ओवर नेक्स्ट प्रॉब्ली 5-10 क्वार्टर्स? देखो आई थिंक भाई इट इज़ नॉट माई, हम तो शक्कर व्यापारी है। इफ़ यू आस्क मी कि शुगर का भाव क्या रहेगा और कहाँ बेचना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, शुगर मार्केट इज शेयर मार्केट इज नॉट माई I कप mean, ऑफ it's टी। Rahul बट bhai, it's not a नहीं recommendation. नहीं, हाँ, It's बट आई वुड रेकमेंड दैट यू वर्क इट इन दैट वे। इज आप एसेट वैल्यूएशन की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। आई थिंक अगर आप देखोगे तो टॉप तीन जो स्ट्रक्चर में है, वो अराउंड 9,000 करोड़ के मार्केट कैप पर है, और उनकी आप क्रशिंग कैपेबिलिटीज़ को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि कौन अंडर परफॉर्मर है आज की तारीख में. सो दैट विल गिव यू द फ्लेवर, बिकॉज आपको ये समझना है कि एसेट लगाना आज आसान नहीं है, क्योंकि 15 किलोमीटर के रेडियस का आपको लाइसेंसिंग एक्ट है, नया एरिया आ नहीं सकता है, उसी एरिया में ग्रोथ पोटेंशियल होगा. तो मैं ये बताऊंगा आपको कि पहले टॉप 3 अगर आप वेरीफाई कर लोगे और उनका मार्केट कैप देखोगे टू इट्स क्रशिंग कैपेबिलिटी एंड एथेनॉल प्रोडक्शन, तो आपको समझ आ जाएगा कि नंबर 7 से लेके 10 में कौन लेगार्ड है और कौन लेना चाहिए बेसिकली हमको. So I personally feel that that's the barometer, because per ton of cane crush will remain standard for everybody, irrespective of the position. And I think companies like Balrampur will continue to do wonder, because of the way the balance sheet is structured. I think they should be the one leading the space, in my opinion. But I mean, I would always go with that. Then I think in South India, the market cap is very very low currently, because most of the sugar companies had no sugar cane there for virtually few years. But if that space starts to rise, because sugar cane needs to come in South India, अगर वो आ गया तो just for your information, अगर आज बलरामपुर 10,000 करोड़ पे है, तो आप देखिए राजश्री शुगर 125 करोड़ के मार्केट कैप पर है. And I mean, both are not comparable, but at the end of the day, if Rajshri Sugar has sugarcane availability, I think they will also be able to produce enough sugar as well as ethanol. So I think in my personal opinion, I think it's all about going to the drawing board again, because हर स्टॉक 5-5 गुना बढ़ गया है, तो ये टाइम पे रिकमेंडेशन करने को भी हिचकिचाहट होती है. सो आई थिंक इट्स मच बेटर आप जा करके मार्केट कैप to its cane crushing capacity देख लेंगे, तो I think you will get the answer that there are few in the north space still available at a very good discount to Balrampur or to Dhampur. राहिल भाई, तो एक बात बोलना था. जी. According to me, for another 2 years, sugar share prices are discounted. वो जो भी इथेनॉल स्टोरी है ये वो. और दूसरा, ये राजश्री मैडम कैसा है? ठीक है. हाँ, मैं शुगर केन तो अभी वहाँ पे उगना शुरू हो गया सर. 4 लाख टन हुआ था लास्ट ईयर, ये साल 1 मिलियन के करीब साउथ ने बनाया है. आई थिंक सदर्न मिल्स कैन गो अप टू 3 मिलियन टन ऑफ शुगर प्रोडक्शन. वो 4-5 साल बेचारे ड्रॉट में रहे, वहाँ पे बारिश ही नहीं थी, तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटीज था. थिरुअरुरन जैसी कंपनी तो बैंकरप्ट हो गए एंड इट वेंट अंडर एनपीए. तो आई थिंक अगर उन्होंने पानी और गन्ने पे मैनेजमेंट ले लिया, कंट्रोल ले लिया, तो आई थिंक सदर्न इंडिया शुड स्टार्ट टू आल्सो लुक गुड एज फार एज द शेयर्स आर कंसर्न. Yeah, so we should look over there also. हाँ, मतलब दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग सर, कि अगर आप मार्केट कैप और केन क्रशिंग कैपेबिलिटी जो मिल के पास है, अगर उससे डिराइव कर लोगे, तो यू विल हैव द आंसर के क्या करना चाहिए आपने बेसिकली. और एक उगर शुगर है, वो है, अच्छा है, आदमी लोग अच्छे हैं. उगार, हाँ, उगर, नहीं वो तो मैनेजमेंट भी अच्छा है. हाँ. उगार भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. सर विद सच काइंड ऑफ वैल्यूएशन हर चीज अच्छी रह जाएगी ना. अभी मतलब अभी कोई दुख नहीं है ना. So Rahil bhai, any view on Renuka Sugars? There is lot of, I know these are all rumors, but there is lot of buzz in markets between Renuka Sugar being taken over by Adani Group, and there are a lot of rumors going on. So have you heard anything on that side? From the close circles or something? I will just put a disclaimer. It is just grapevine what you Rahil bhai you would be talking about. It won't be considered as a investment consultation or a investment advisory. नहीं, very difficult भाई विशाल. I mean nobody will come out in the open and speak about it. I personally feel कि अगर आज जैसे अडानी जैसी कंपनीज है, अगर एनर्जी सेक्टर साइड देखेगी, तो एथेनॉल इज वेयर इट इज. एंड आई थिंक रेणुका इज अमॉन्ग्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एथेनॉल इन द कंट्री टुडे. 13-14 बिलियन 1.3 बिलियन लीटर्स के करीब, 13 करोड़ लीटर, सॉरी, just keep jumping between this number, but 13 crore liter, I think they are the highest ethanol producer. But I don't know whether this ticket size is what Adani would look at. But I think at the end of the day, Wilmar is owning the Renuka today.
and Adani Wilmars are partners in businesses like the edible oil business. So naturally, it sounds like a package deal for each other, but I don't think so. कोई भी ऐसे openly तो आके बात नहीं करेगा भाई मेरे हिसाब से. And I Right, right. and I think why would Wilmar also leave such an asset at such low valuation? Fair. So we will keep it for the investors to keep judging that, or probably we will wait for the announcements if from either from Wilmar or Adani or any media reports. So Rahul bhai, I'll just open the space for questions. So anyone who would like to ask questions to Rahul bhai, you can send your speaker request, and we are good to ask questions. Angad and Ranvijay, anything from your side? Yeah, Vishal, I'm in middle of something, please. Huh? Just give me a second. Huh? Yeah, yeah, fair enough. Angad, any question from your end? आई थिंक नो. शरद भाई, आपकी तरफ से और कोई सवाल? Fair enough. I think Rahil bhai, no questions. Preeti, if you have to ask something, please. Nothing. I think we have covered it all. It's just that according to me, if we can brief on the profit margins that have improved, and I think there have been lot of production happening. So the cyclicality of this particular segment has been on track probably, and as he was talking about milk, and also they have also scaled the production a lot. So I don't think so there'll be any scarcity or price rise or some sort of thing. So if we can just talk on this, that is the only thing which I would like to understand, because I think supply crunch shouldn't be there. That's the only thing. However, the rest of things I think Rahul is already covered. Then I think Ranvijay is also has some questions, so you can take him. Yeah, yeah. Sorry, my question is related to Preeti. What you're saying, sir? Technically, what is happening is this is being more like agriculture related field, you know, and not very professional most of the times. Most of the like Bajaj Hindustan has delays and other things happening in payments and other things. What dynamics of industry you think uh, should happen, say tomorrow, if these agricultural reforms and other things happen in India, any game changer sort of a thing to happen to make it a very professional any other things, or any industry commodity related, so probably agriculture related commodities we find in India is not very professionally managed till now. Most of the times, I'm not saying about any particular one, but any reforms, anything which can make us probably push Brazil and others out on a higher side. सर ब्राज़ील को तो हम बाहर कभी कर नहीं सकते because it is God gifted that they have the land and the rains by their side. So I think उसको उनको तो दुनिया को they can be supplying the world. I think Yeah, we need to look from no, our I'm not, perspective. sir. I'm not saying that way in terms that as in terms that move a bit higher, competing with them. See, what I've known about sugarcane is being it is highly water usage is very high. All right, so management, a new type of breed coming in which uses less of water or something like that. So देखिए just to uh, come back to what you are saying is जैसे मैंने पहले बताया बात करते करते कि 50 टन पर हेक्टेयर यील्ड होता था, वो आज 100 टन पर हेक्टेयर हो गया महाराष्ट्र में. तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म तो चालू ही है हर टाइम पे. वी आर मतलब आई मीन पीपल आर कमिंग अप विद बेटर वेराइटीज़. तो 18 महीने की वेराइटी हो गई, 12 महीने की हो गई, 14 महीने की हो गई. मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कहीं कहीं पे वर्किंग है कि हम 9 मंथ की भी वैरायटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो एग्रीकल्चरल साइड पे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही सर ये ये वर्क इज़ इन प्रोग्रेस है. एज़ फार एज़ प्रोफेशनली मैनेज करना, आई थिंक आप ब्राज़ीलियन और कोई दूसरी जगह कंट्री को वेरी इसके साथ में इंडिया के साथ में कंपेयर करेंगे
तुलना करेंगे तो बेसिकली आप देखोगे कि ब्राज़ील में 70% लैंड ओनर मिल वाले खुद हैं। सो वो अपना गन्ना खुद लगाते हैं, अपना गन्ना खुद उगाते हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, 50 मिलियन किसान है जो शुगर केन उगाता है, और हर एक के पास 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ ज़मीन है, और वो भी कंसोलिडेटेड नहीं है, बिकॉज एक एकड़ में गन्ना लग रहा है, उसके बाद में बटाटा है, फिर टमाटा है, एंड देन पालक है, देन पनीर है, एंड देन यू हैव शुगर केन अगेन। सो ये कंसोलिडेशन नहीं है। ब्राज़ील में इसका कंसोलिडेशन है कि एक एरिया में अगर गन्ना लगा है तो मीलों और किलोमीटर तक गन्ना है। तो आई थिंक एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, जो फार्म लॉज अभी बदलने की बात थी, अगर वो होता टेक्निकली और कॉरपोरेट फार्मिंग्स हो पाती, तो आई थिंक मिल्स लाइक बलरामपुर, धामपुर, जिनके पास आज कैपेबिलिटीज़ विद देयर फंड पोजीशन है, वो अपनी फार्मिंग अगर खुद करते तो हो सकता है दे कैन इंक्रीज द यील्ड एंड डू थिंग्स बेटर। बट उसके अपने रिपरकशंस है कि आपको अपने पैसे लगाने पड़ते हैं गन्ने के अंदर भी आज की तारीख में, वेरज आज किसान खुद वो रिस्क उठाता है और भगवान भरोसे उठाता है। तो आई थिंक पर्सनली प्रोज ऑन कॉन्स है इसके, पर आई थिंक लॉन्ग रन में अगर हमको, जहाँ 7 बिलियन की आज आबादी है वो 9 होगी, 10 होगी, और इसी ज़मीन के अंदर ये सब उगाना है, तो फार्म लॉ को हमको चेंजेस की तरफ और मॉडर्नाइजेशन की तरफ आई थिंक विल हैव टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स इट। बट आज ऑन द ग्राउंड रियलिटी आई थिंक शुगर मिलर्स अभी सर्वाइवल मोड पर है, एंड आई थिंक एग्रीकल्चरल साइड पे सारे ही, तो आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन दैट rather than go into the agricultural side by farming themselves and doing things. सो आज वो एग्री इनपुट पे काफ़ी मदद कर रहे होंगे किसान को, बेटर फार्म प्रैक्टिसेस पे काफ़ी मदद कर रहे होंगे किसान को, बट आज वो खुद जा करके प्लांटिंग करने का रिस्क तो मेरे ख्याल से नहीं उठाएंगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 years आई थिंक इफ द फार्म लॉज आर चेंज्ड, then probably you'll see this farming sector also become a corporate sector probably. So basically, the next boom can come that time. हाँ, मतलब बूम तो है Next ही push. सर, बिकॉज नहीं फार्मर्स नहीं, ऑल्सो boom is there. गेटिंग इनटू अ मतलब the बेटर next प्लान। step up. हाँ करेक्ट, मतलब जहाँ हम 300 मिलियन टन फूड ग्रेन बना रहे हैं, हो सकता है हम बेटर कॉर्पोरेट फार्मिंग से इसी जमीन से 400 मिलियन बना लें। Thank you, sir. That's. Rahil bhai, got a question from one of the listeners. They want to understand how does one calculate the market cap to crushing capacity. अगर कोई एक मिल का एग्जांपल लेके वो थोड़ा सा बता सके तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सर आई थिंक अभी मेरे पास में तो आई डोंट हैव द पेपर, बट आई थिंक जनरल थंब रूल तो यही होता है कि मार्केट कैप को, केन क्रशिंग कैपेबिलिटी अगर मिल की 7.5 लाख टन की है पर ईयर, जिससे कि वो 75,000 टन चीनी बनाता है, तो मार्केट कैप यू डिवाइड बाय इट एंड यू स्प्लिट दैट बिटवीन द एथेनॉल एंड शुगर प्रोडक्शन। I think that's the way one can derive the formula, because as you see today the rally in the market is very abrupt. I think 2-3 स्टॉक बढ़ते हैं बहुत, देन 3-4 पीछे रुकते हैं, फिर वो बाद में बढ़ते हैं जब ये बढ़ चुके होते हैं। सो आई थिंक इफ यू सी द फर्स्ट 6, 10, 7, 8, 10 पोजीशंस, ये इसी चाल में चली हुई है अभी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आज जैसे मवाना जैसा स्टॉक है, आप उसको कोरिलेट कर दो विद द केन क्रशिंग कैपेसिटी, 1 मिनट के लिए डेट को आप बाहर रख लीजिए बैलेंस शीट में से, तो आप देखोगे कि बजाज जो है it is the most undervalued currently because of its own problem. बट आई थिंक उसको 1 मिनट के लिए फिर हम बाहर रख दें, बट जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसके साथ कंपेरेबल कर ले, तो आई थिंक दैट्स द फार्मूला वन कैन टेक आउट। बट आज मेरे पास में वो फार्मूला हैंडी नहीं है, बट ब्राज़ील में जनरली अगर आप एसेट खरीद रहे होते तो जनरली आप कहते हैं कि भाई आज आपका एसेट जो है वो $100 पर टन ऑफ केन क्रशिंग है, तो बेसिकली लोहा, ज़मीन, इन सब की बात करते हुए आप एक एंटरप्राइज वैल्यू पे आते थे, एंड दैट यूज टू डिराइव द मार्केट कैप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। शुगर में जो हिसाब से लास्ट 3-4 महीने में, 6 महीने में हिंदुस्तान में करवट बदला है, इट्स मोर और लेस वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट एंड से कि बस यही करना चाहिए। बट मेरा एक सजेशन था, बिकॉज आई थिंक आप लोग इक्विटी मार्केट से हो और मैं नहीं, तो आई थिंक यू विल हैव अ बेटर इकोनॉमिक सेंस टू हाउ टू डिराइव इट फ्रॉम द केन क्रशिंग कैपेसिटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गन्ने का जितना क्रशिंग कैपेसिटी है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन वहीं से निकलेगा। आपके पास गन्ना कितना है और आपके पास पैसा बैलेंस शीट पे कितना है, उससे नहीं निकलेगा। राइट सर, राइट। सो निमेश जी, आपका एनी क्वेश्चंस, और इफ नॉट वी विल, या निमेश जी। Good evening, Rahil.
Good. I was just reading a white paper which is in circulation in relation with two aspects. Aspect one, which you rightly mentioned, is about sugar as a crop which we be using it. There has been a lot of thrust about using rice and maize on the same front. So on a note of equanimity, I mean, knowing the type of things which have been happening in southern, do you see? Some sort of, could you throw some ray of light on those aspects as well? And which state you think could be taking up a lead? That's question one. Question two is with industries like Raj and a few other engineering which have got a few patents which have been listed in terms of having the right type of a technology to ensure that the compliances are followed as per government standardizations. So if that could be, if that can act as a catalyst and if can throw some perspective on that as well. Thanks, right. So Benay, I think if you have missed the point, but I mentioned on the ethanol S&D कि हमको 10 बिलियन लीटर 9 से 11 बिलियन लीटर लगेंगे अराउंड 2025 फॉर ब्लेंडिंग पर्पसेस. आज हमारे पास जो कैपेसिटीज़ है अराउंड 3.2 बिलियन लीटर्स की है. एंड आई थिंक शुगर केन से हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे अबाउट 5 to 5.2 बिलियन लीटर्स until 2025. Balance will come from the grain segment, which is the corn and the broken rice. But important point to note is that we are not the 1G economy. I think food versus the fuel. That debate will always remain in our system till we exist. So basically, राइस ब्रोकन राइस की इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत बहुत अगर आप उसको देखोगे तो 40 रुपए का राइस जो है 20 रुपए खरीदना उसका कन्वर्जन वगैरह वो इकोनॉमिक सेंस आज बैठता नहीं है. बट टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ अवेलेबिलिटी सो इट कंटिन्यूज. और सिमिलरली कॉर्न का उत्पादन काफ़ी बढ़ रहा है सो दैट विल कंटिन्यू. सो आई थिंक states like UP, Maharashtra, and Karnataka will lead this 5.2 billion liters of ethanol production, which will come out of these three states. And balance states जो है जैसे बिहार हो गया आपका छत्तीसगढ़ हो गया दूसरे जो रीजन्स है वो कॉर्न बेस और राइस में चले जाएंगे. So that is where they will be able to produce more on the grain side, which is the eastern part of the country, and molasses base and sugarcane base will be on the west coast side of the country. So this is to answer your first question. The second one, I am not too technical to answer it because I don't operate a manufacturing plant, but there are pollution norms, there are PESO norms, and it takes a lot of time for a clearance from the environmental perspective. So that is a time consuming, and it will take its own course and time. But I think if you look at the number of applications with the government to set up the ethanol plant, we far exceed the number which is desirous. So I think the scope is for another 2 billion liters out of currently until 2025 from the sugar side. I think we shall be able to achieve it. But you are right. I think it will take a while for the clearances to come from the environment and all. But we are on course for it. So I personally see that as one of the big hurdle. But I think over a period of time it will be much quicker because it's a prime minister driven a vision to blend 20%. So I think we will not be bypassing the laws, but I think we'll have some faster speedy way to get those clearances done. But that remains a hurdle, and I'm not qualified enough on a technical side to answer that. And last but not the least, Rahil, but in terms of once you have this efficiency of the blend of ethanol 20, there is understanding that it's basically an octane-based fuel. Two aspects. Aspect one is in terms of transportations and how does it really impact for a common layman? I mean, in terms of when they have this ethanol 20, do you see the efficiencies of the vehicles dropping down? That's first. And second part of the question, which amongst the other countries on the anvil do you see are rigorously probably trying to preempt and trying to jump the bandwagon and understanding and taking up this thrust of moving from an agro base to an energy sectors and trying to come out with the right policies, specifically in Europe or in Southeast Asia? सर जहाँ तक फ्यूल एफिशिएंसी का सवाल है, I think Brazil is the answer to your question.
कि अगर पेट्रोल का दाम 100 रुपया होता है तो जनरली एथेनॉल का दाम कम होता है इन अ फ्लेक्सी फ्यूल कार. इंडिया में आज वो कॉन्सेप्ट नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव अ फ्लेक्सी फ्यूल कार. So we are blending what is coming from the to the petrol pump, and as a consumer, I think there will be some loss on the calorific value of the car driven, but again, I mean, CM or other association will be better answer to that. But I think personally speaking, I think there will be one a good amount of not sizable but a small amount of hit on the mileage of the car for sure because we don't have the scrapping policy. तो हम 15 साल वाली गाड़ी में भी 20% डाल रहे हैं और हम 2 साल पुरानी गाड़ी में भी 20% डाल रहे हैं. So I mean, you can understand the engine ability may not be the same which was 15 years ago, and the same to have those blending operation done. So that's the first answer to you. And the second is we are seeing that Thailand is one of the country which is aggressively going into the ethanol model. Indonesia, Malaysia, the biodiesel program because of their edible oil production. Europe sir flip flop hai. At a time you see them doing a lot of thing and then suddenly you don't see them doing anything. So वहाँ को थोड़ा आई थिंक ब्रसल्स में जाके एक आध साल बैठेंगे तो ही पॉलिटिक्स समझ पाएंगे एनर्जी सेगमेंट की. Before that तो आई थिंक रीडिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ फ्लेवर. US में ethanol blending is going is doing well. Brazil is one of the country which is since 75 doing it. I think बाकी if I read from the sugar perspective, मुझे नहीं लगता और कोई कंट्रीज़ में है और ना ही मैंने ऐसा कहीं से सुना है कि कुछ कंट्री इंपोर्ट कर रही है एथेनॉल टू ब्लेंड. सिर्फ ब्राज़ील इंपोर्ट करते हुए मैंने देखा है फ्रॉम यूएसए टू ब्लेंड इनटू एथेनॉल. इंडिया एथेनॉल इंपोर्ट करता है फॉर केमिकल इंडस्ट्री, which is to make the byproducts of ethanol, sorry, chemicals and things. But aggressively hearing from any other country to import ethanol for blending, probably Philippines or on the Southeast Asia. Not heard about anything from Australia's perspective, जो 40-50 लाख चीनी बनाता है. But I think that's something which I'll have to go and deep dive again. But reading from the memory which I have, I think this is the answer which I have. Europe is very complicated, sir. एक लाइन में अगर आंसर दे सके तो I think we can all go into British into European politics then basically. तो यूरोप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है टू आंसर, बट आई थिंक दिस इज वेयर इट इज. Rahil, last but question is means if we have to understand and prioritize all the four alternative fuels which are on the anvil with bio CNG, EV space, ethanol coming up, okay, with its additive components, is it a fair leverage to understand that both of these are listed commodities on the exchange? And understanding that if there are not many number of countries which permissibly are having the grandiose vision to expand it, so would it be presumptive to assume that it would be better gyration to probably look at ethanol as a marginal larger export as compared to raw sugar in the times to come? सर अभी तो पहले वी हैव टू गो टू 10 बिलियन लीटर्स फॉर आवर ओन कंजम्पशन. आई थिंक टुडे वी आर नॉट इवन गोइंग टू डू आवर 20% blending. So after 20% blending, Gadkari Saab is talking about flexi fuel car. So once the flexi fuel comes in, we'll have a larger consumption base which can come in. So currently, I think looking at 500, 600 million ton of sugar cane which India is growing, I think take for example that we need 30 to 32 million for our domestic consumption by 2025. So we are left out with what? We are left out with 150 million tons of cane, and that should be enough to do 20% blending and about little addition to our flexi fuel cars. So we currently, with the amount of sugar cane we can grow, I think we will not be able to export any ethanol in the near future. और दूसरी चीज़ एथेनॉल का आज आप ब्राज़ील से प्राइस देखोगे या यूएस से प्राइस देखोगे तो बहुत डिस्काउंटेड टू इंडिया है. आई थिंक कंज्यूमर ईयर वी आर पेइंग ईयर एज 70 rupees or 75 rupees for the ethanol to be blended. I think there the fair value will be about 45 to 47 rupees a liter. I don't have the calculator in front of me, but 45 to 47 मेरे हिसाब से होगा. So इंडिया से एक्सपोर्ट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब भी हम
जब भी हम एक लेवल पे पहुंचेंगे कि हमारा खुद का कंजम्पशन होने के बाद हमारे पास में सरकारी सपोर्ट है टू कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट एट अ डिस्काउंट टू इंडिया, देन ओनली इट इज़ देन ओनली इट इज़ वर्केबल. सेकेंडली, आप ईवी स्पेस की जहाँ बात करें सर, तो आप देखिए लास्ट लास्ट जो नंबर्स आए हैं, आई थिंक दैट सेगमेंट इज ग्रोइंग, एंड इफ दैट segment grows, I think our consumption on petrol will start to come down. And I think something which I was reading recently, that 60% of our petrol consumption is in motorbikes or scooters, and that segment can really go into the EV segment quite quickly. So that is one of the aspect we have to continue to monitor as far as ethanol blending is concerned at 20%. Thank you, Rahil bhai, for your valuable inputs. On a lighter note, when do we see mere commodities going public? Uh, Now that's we are still 3 years, just completed 3 years, right? So this year our turnover was 995 crores, and and we have done whatever best we can to start with. But this is just the third year of me as an entrepreneur. So let's see. I think probably in couple of years time, if I get the right value. Currently, we see couple of our peers getting listed, which is one of his OMA export. So I think अगर वो list हुए हैं तो I think in another 2 years it's time for Mayor to look at it. But I'm looking at some ethanol plants, and once if I get that ethanol plant, then it will be the time to look at IPO. Just going by our trading book and trading knowledge, I think we rather keep the equity in house, and it doesn't make sense as a trading company to go public. Absolutely correct. Any plans to doing backward integration of setting up plants or something? शुगर Uh, केन के बेस पे प्लांट पे जाने का मन नहीं है विशाल, बट अगर रिफाइनरी मिले, अगर एक पोर्ट बेस रिफाइनरी शुगर की मिले, तो उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ट्रेडिंग के साथ जोड़ने की कोशिश करने की उम्मीद है हमारी. yeah, I know you have had this dream for quite some time. I think it's been almost last 5 6 years. You have been talking about this dream. But that's what you live for ना, ख्वाब में ही जीते हैं. That's what Absolutely, they are. absolutely. No, no, you definitely are good wishes with you. You will definitely achieve it sooner than later. Thank you so Yeah. much. I would like to thank you once again on behalf of everyone. आपका बिजी शेड्यूल में से आप टाइम निकाल के आए सर. सबको बहुत वैल्यूबल इनपुट्स यू हैव गिवन, एंड वी वुड लव टू डेफिनेटली hear from you often on whenever it is possible for you as well. And any questions definitely from the investor fraternity, and like Nimish bhai also had a lot of valuable questions. Thank you so much everyone. Thank you so much Rahil bhai. Thank you, sir. Thanks. Thank you so much. Thank you.